Hello, ladies and gentlemen. How are you? You're watching the Bear Act discussion series with me, Avinash Paswan. Today in this video, we are going to discuss Section 161 of CRPC. Section 161 of CRPC provides for procedure of examination of witnesses by the police officer. So far, we have discussed 154, Section 154, which talks about registration of the information in the case of cognizable offense. 155, which talks about registration of the information in the case of non-cognizable offense. Section 156, which talks about power of the police officer to investigate the matter. Section 157, which talks about the procedure of investigation by the police officer. We haven't discussed 158 and 159 because it does not talk much about, it simply talks about the report that has to be submitted to the magistrate, and 158 talks about the how a report has to be submitted, and 159 talks about the power of magistrate to call for the investigation, right? We have also discussed section 160, which talks about the power of a police officer to call for the witness, right? Now, in this video, we will talk about 161, section 161, which provides for the procedure of the examination of the witness. We know that investigation is carried out after the registration of the case. So, if the police officer comes to know that there is a person who is acquainted with the facts and circumstances of the case, right? So, अगर कोई व्यक्ति है जिसको कि केस के बारे में फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस केस के पता हैं, तो उस व्यक्ति को लॉजिकली देखा जाए तो उस व्यक्ति को रिवील करना चाहिए उस सारा मैटर. अगर वो रिवील नहीं करता है तो फिर पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर होना चाहिए कि वो उस व्यक्ति से पूछ सके कि आप रिवील करिए, राइट? एंड वही पावर गिवन है किसमें? सेक्शन 160 में. और एक बार कोई व्यक्ति बुलाया जाता है एग्जामिनेशन के लिए एज अ विटनेस, या फिर द पर्सन कम्स बाय हिमसेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन एज अ विटनेस, देयर इज अ प्रोसीजर लेड आउट, कि एक प्रोसीजर है, आप उसी के अकॉर्डिंग उसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं. बिकॉज वी फॉलो द रूल ऑफ लॉ एंड एनीथिंग हैज टू बी डन एज पर द लॉ. एनीथिंग यू आर डूइंग नॉट एज पर द लॉ विल नॉट बी वैलिड इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ. Do you understand that? Yes. So anything that you do not as per the law will not be valid in the courts of law. So 161 has 3 subsections. Subsection 1 talks about that any person who is acquainted with the facts of the case and is called for the examination as witness, the police officer may ask him to reveal the facts and circumstances of the case orally. This is the subsection 1, that the police officer may ask him to reveal the facts and circumstances orally. Now, second subsection talks about that the person is bound to answer all the questions truly. The person is bound to answer all the questions truly. If he is not doing so, it is an crime under IPC. But there is a proviso that the person is not bound to answer any question which expose him to any criminal charges. ठीक है, मतलब मान लीजिए आप कुछ भी पूछ रहे हैं उससे, आप सारी चीजें पूछें, वो आंसर देने के लिए बाउंड है, बट कोई ऐसा सवाल आप नहीं, मतलब वो बाउंड नहीं है उस ऐसे सवाल का आंसर देने के लिए जिससे खुद उस बेचारे पे ही कोई क्रिमिनल चार्जेस लग जाएं. ठीक है, ओके. नाउ सबसेक्शन 3 टॉक्स अबाउट that any statement made during the examination by the witness has to be reduced into the written form. ठीक है, if there are more than one witness तो सारे witness का रिकॉर्ड अलग अलग होना चाहिए. वैसे हम पढ़ेंगे सेक्शन 172 में कि एक केस डायरी भी होती है जो कि मेंटेन करनी होती है. ठीक है, तो केस डायरी में ही आप हर विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे और ये मैंडेटरी है, राइट? वैसे तो मे प्रोविजन अप्लाई है, यहां पे डिस्क्रिप्शन है पुलिस ऑफिसर के, बट रूल हैज बीन मेड दैट इट हैज टू बी मेड compulsorily that all the police officer has to record
द स्टेटमेंट्स ऑफ द विटनेसेस इन रिटन फॉर्म। ठीक है, केस डायरी में आप उसको रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड करिए। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। ये है प्रोसीजर, किस तरीके से एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली प्रेस द लाइक बटन एंड मोर इंपॉर्टेंटली शेयर इट। जितने ज्यादा लोगों के पास हो सके आप शेयर करिए, जितने ज्यादा लोग इसको देखेंगे नॉलेज सबकी बढ़ेगी। दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव वीडियो एंड आई डू नॉट क्लेम माई सेल्फ टू बी द एक्सपर्ट ऑफ द सब्जेक्ट। नो, मैं थोड़ा पढ़ता हूं, कुछ समझ में आता है तो वही मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको, राइट। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।